अस्मत् परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत् परमेश्वरो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री परांकुशदासाय नमः। श्रीमद् व्यामनमुनये नमः। मिश्राय नमः। श्री पुंडरीकाक्षाय नमः। श्रीमन्नाथमुनये नमः। श्रीमते सठगोपाय नमः। श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। श्रीयै नमः। श्रीधराय नमः। ओम वेंकटेशाय पद्मावत्यै नमः। श्रीशेष पक्षीश्वर पद्मगर्भ सेनेशमुख्यान् प्रतिबोधयन्तां श्रीपांचरात्र आगम शास्त्रमाद्यं विष्णुं सदाहं शरणं प्रपद्ये। दर्भेष्वासीनः दर्भान्धारयमाणः पवित्रः प्राणानायम्य। ఒకసారి ముక్కు మూసుకోండి। ఓం భోః ఓం భవః వగం సవః వం మహః వంజనః ఓం తపః వగం సత్యం ఓం తత్సవితుః వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాతమాపో జ్యోతిరథామృతం బ్రహ్మభూద్భవస్య వరం। వదిలేయండి। శ్రీ గోవింద గోవింద గోవిందాయ నమః। మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीरङ्गस्य उत्तरप्रदेशे कृष्णा कावेरी मध्यदेशे आदिवराहक्षेत्रे सुवर्णमुखरी नदी समीपे तुलसीग्रामे पद्मावती नायिक्याः सन्निधौ भागवत आचार्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यवहारिक चान्द्रमानेन प्रभवादि सृष्टि संवत्सराणां मध्ये श्री विश्वावसु नाम संवत्सर दक्षिणायने हेमंत ऋतौ मार्गशिर मासे कृष्णपक्षे नवम्यां उत्तर नक्षत्र वासरः
वासरस्तु स्थिरवासरे शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण सकल विशेषेण विशिष्टायां शुभदिनौ श्रीमान् गोत्रोद्भवस्य नामधेयस्य नक्षत्रोद्भवस्य మీ గోత్రం పేరు నామధేయం చెప్పుకోండి. చెప్పండి. మమ కుటుంబస్య క్షేమః స్థైర్య ధైర్య వీర్య అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధి సిద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ ఫలపురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం मम गृहे सर्वमंगल कार्याणि अनुकूल सिद्ध्यर्थं मम गृहे सकल भूत प्रेत पिशाची निवारण सिद्ध्यर्थं मम गृहे सकल शोक शत्रु निवारण सिद्ध्यर्थं मम गृहे सकल विषहरण निवारण सिद्ध्यर्थं मम गृहे सकल संपत्कर सिद्ध्यर्थं मम गृहे सकल विद्या प्राप्ति द्वारा अखंड ऐश्वर्य अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं श्री पद्मावती नायिक्षाः सन्निधौ प्रातःकाल आराधना अनंतरं श्री पांचरात्र आगमोक्त प्रकारेण विष्णु पद्म कपिंजल संयुक्त प्रकारेण संभवित नियमेन श्री पांचरात्र आगमोक्त कल्याण महोत्सवम् आचार्य मुखेन करिष्ये. प्रथमतः निर्विघ्न परसमाप्ति अवाप्ति सिद्ध्यर्थं विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये. ततः स्थलशुद्ध्यर्थं देहशुद्ध्यर्थं शुद्ध्यर्थं द्रव्यशुद्ध्यर्थं शुद्ध्यर्थ पुण्याः वचनं करिष्ये. तदंगत्वेन कन्यादान महोत्सवम् आचार्य मुखेन करिष्ये. अंदर अम्मवारिनि प्रार्थना చేయండి. श्री गुरुभ्यो नमः. श्री श्रीवत्सांकितं हृदि भावयामि. भक्तजनों, भागवत प्रियों, दर्शकों एवं श्रोताओं, आज के शुभ अवसर पर मंदवार अर्थात शनिवार के इस शुभ पावन अवसर पर जहाँ पर अधिष्ठान भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी अति प्रसन्न रूप से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, वैसे दिव्य पावन अवसर पर यहाँ जो तिरुचानूर क्षेत्र है, जो माता श्री महालक्ष्मी स्वरूपिणी श्री पद्मावती देवी का निज वास है, वैसे दिव्य स्थान में भोग श्रीनिवास मूर्ति समेत श्री पद्मावती देवी का हम यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। सिंहासन पर विराजते हुए देवी देवताओं का यहाँ पर दिव्य कल्याणोत्सव करवाने जा रहे हैं। आचार्यगण स्वयं साक्षात भगवान नारायण एवं उनके भक्तों द्वारा प्रोक्त विशेष पांचरात्र आगम का यहाँ पर अनुसरण करते हुए श्री विष्णु कपिंजल संहिता आदि संहिताओं का यहाँ पर प्रयोग करते हुए विशेष रूप से श्री विश्वक्सेन आराधना पुण्याह वचनादि कार्यक्रमों के साथ साथ प्रथमावलोकन के दिव्य विधियों को जोड़ते हुए इस दिव्य कैंकर्य को परिपूर्ण करेंगे। भक्तजनों, भगवती जो ओमकार रूपिणी देवी विशुद्ध सत्वरूपिणी देवानां जननी त्वां हि प्रसन्ना भवसुंदरी, जो भगवती साक्षात ओमकार स्वरूपिणी है, जो समस्त सत्व गुणों के लिए शुद्ध मूर्ति है, वैसे दिव्य स्वामिनी समस्त लोक चक्रवर्ती भगवती देवानां जननी त्वां ही
निश्चय ही यही देवी लक्ष्मी ही समस्त देवी देवताओं के लिए जननी है, माता है। वैसे दिव्य भगवती सुंदरी जो समस्त सौंदर्य युत भगवती सदा प्रसन्न रहे। परिपूर्णा सदा लक्ष्मी त्राती तु शरणार्थिषु विश्वाद्या विश्वकर्ती च प्रसन्ना भव सुंदरी। जो परिपूर्ण स्वरूप में समस्त ब्रह्मांडों में व्याप्त है, जो लक्ष्मी स्वरूपिणी है, जो आर्तत्राण परायण स्वरूप है, वैसे दिव्य भगवती विश्वाद्या समस्त विश्व से जो पूर्व जो अपना रूप धारण करती है, तथा विश्व जननी विश्वकर्त्री जो विश्व को स्वयं से जो उद्भव करे, वैसे दिव्य स्वरूपिणी भगवती सुंदरी अर्थात लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहे। उन महान भगवती से विवाह करने हेतु यहाँ पर दिव्य आसन पर विराज रहे हैं हमारे नारायण, जो अपने दिव्य स्वरूप में विराज रहे हैं, जिनका रूप है मायावी परमानंदम त्यक्त्वा वैकुंठमुत्तमम स्वामी पुष्करिणी तीरे रमया सह मोदते। भगवती रमा अर्थात लक्ष्मी के साथ निवास करने हेतु जो साक्षात वैकुंठ का त्याग करे और इस ब्रह्मांड में, वह भी विशेषतः इन अरण्यों में, शेषाचल के पर्वतों में, विशेष रूप से शुकपुरी के नाम से माने गए तिरुचानूर क्षेत्र में जो भगवान निवास करने लगे हैं, स्वामी पुष्करिणी के तट पर जो निवास करने लगे हैं, वैसे दिव्य प्रभु नारायण को हम प्रणाम करते हैं। वैसे दिव्य नित्य कल्याण चक्रवर्ती का हम इस आसन पर दर्शन कर रहे हैं, जो विशेष अलंकरणों के साथ वनमाली गदीशांगी शंकी चक्री चनंदगी श्रीमन्नारायणो विष्णुर्वासुदेवो भिरक्षदु। जो भगवान वनमालाओं को धारण किए हुए, विशेष रूप से शंख चक्र पद्म एवं गदा को धारण किए हुए जो विराट विश्वरूपी हैं, वैसे दिव्य प्रभु यहाँ विशेषतः इस क्षेत्र में विशेष रूप को धारण किए हुए शंख चक्र वरद एवं कटि मुद्राओं के साथ अति सुंदर रूप में यहाँ पर हमें दर्शन देते हैं। उन महान कली कल्मश दोषों को निवारण करने वाले दिव्य प्रभु का हमें यहाँ पर दर्शन मिल रहा है। दर्शन करिए और इस महान उत्सव का लाभ पाइए, जहाँ पर स्वयं साक्षात ब्रह्मा का स्थान वहन करते हुए आचार्यगण इस दिव्य कैंकर्य की परिपूर्ति करते हैं तथा भगवान को विशेष कैंकर्य का यहाँ पर समर्पण करते हैं। प्रथमावलोकन जैसे कहा गया है, प्रथम बार जब माता श्री महालक्ष्मी स्वरूपिणी पद्मावती भगवान नारायण को जब देखती है, तो उनके जो भाव हैं, जैसे उनके लिए इस दिव्य कल्याण महोत्सव में इस विधि को रखा गया है, ताकि वही उनका वह अनुभव पुनरावृत्ति हो, बारंबार उनके लिए वह आनंददायी हो, तथा हम भक्तों के लिए उनके प्रथमावलोकन दर्शन का हमें भी पुण्य प्राप्ति मिले। इस दिव्य संकल्प के साथ यह दिव्य कैंकर्य परिपूर्ण किया जाता है। भक्तजनों, इस विशेष कल्याणोत्सव के दर्शन के माध्यम से हम भक्तगण श्रद्धालु विशेष रूप से धन कनक वस्तु वाहनादि समृद्धियों के साथ जो इष्ट फल प्राप्ति है, वह भी हम सुखतः पा सकते हैं। विशेष रूप से नारायण के इस दिव्य मंगल स्वरूप श्री वेंकटेश्वर स्वामी का दर्शन समस्त सुखदायी है। जो भगवान नमस्त्रैलोक्यनाथाय विश्वरूपाय साक्षिणे शिव ब्रह्मादि वंद्याय श्रीनिवासाय ते नमः। जो भगवान तीनों लोकों के स्वामी हैं, जो विराट विश्वरूपी हैं, जो भगवान समस्त देवी देवताओं द्वारा वंदनीय हैं, वैसे श्रीनिवास मूर्ति के दिव्य कल्याण महोत्सव का दर्शन करिए, समस्त सुख की प्राप्ति पाइए। ओम अग्ने क्रत्वा क्रतो गम्रनो यत्ते पवित्रमर्चिषे अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्याम् देव सवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे। वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्यै बह्वीस्तनुवो वीतपृष्ठाः तया मदन्तः सधमाद्येषु पयज्ञस्यामपतयोरयीणाम्
वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातो वातः प्राणेन शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसा पयोभिः ऋतापरे यज्ञिये मा पुनेताम् बृहद्भिः सवितस्त्रिभिः परिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षेः पुनाहिमा येन देव अपुनत येनापो दिव्यङ्गशः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनेमहे यः पावमानीरध्येते ऋषिभिः संहृतगं रसम् सर्वगं सपूतमश्नाते स्वदितं मातरिश्वना पावमानीर्यो अध्येते ऋषिभिः संहृतगं रसम् तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधूदकम् पावमाने स्वस्त्ययनेः सुदुगाहि पयस्वतेः ऋषिभिः संहृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगं हितम् पावमानेर्दिशन्तु नः कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पावमाने स्वस्त्ययनेः सुदुगाहि घृतश्च्युतः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगं हितम् येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रम् श्यामगं हिरण्मयम् तेन ब्रह्मविदो वयम् भूतं ब्रह्म पुनेमहे इन्द्रः सुनीते सह मा पुनातु सोमः स्वस्त्या वरुणः समेच्य यमो प्रपन्नाभिः पुनातु मा जातवेदामोर्जयन्त्या पुनातु भूर्भुवः सुवः तच्छय्योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं गातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः मधोनासमञ्जन् शरण्यश्चम्रेयजते प्रचेदाः ईलितो देवैर्हरे वां अभिष्टरा युक्ताः नो हविषा शब्दमानः पुरन्दोगोत्रभिद्वज्रबाहुरायात् यज्ञमुपनो जुषाणः जुषाणो बर्हर्हरे वान्न इन्द्रः प्राचेनज्ञ सेदत्प्रदिशा पृथिव्याः पुरप्रथा प्रथमानज्ञस्यो नमादित्य रक्तं वसोभिः सजोषाः इन्द्रं द्वरः कवशो धावमाना षाणयन्तु जनाय स्वपत्नेः द्वारोः देवीरभितो विश्रायन्दाग् सुवीरावेरं प्रथमानामहोभिः उषासा नक्ता बृहते बृहन्तं पयस्वते सुदुर्गेशोरमिन्द्रम् तन्तं तदं पेशसा संवयं देवानां देवं यजतस्वरुक्मे देव्यामिमानमनोषः पुरुत्राहोतारा इन्द्रं प्रथमा सुवाचा
मूर्धन्यज्ञस्य मनाददाना प्राचीनं जातर्हविषाः वृथादः तिस्रो देवैर्हविषा वर्धमाना इन्द्रं जुषाणा जनयो न पत्नेः अच्छं अन्तं तं पयसा सरस्वतीलो देवे भारते विश्वतोर्देः त्वष्टा दधच्छोष्ममिन्द्राय वृष्णपाक चष्टुर्यशसे पुरोणे प्रशाय जन्मृषाणं भूरिरेदा मूर्धन्यज्ञस्य समानत्वदेवान् वनस्पतिरवसृष्टो न पाशैस्त्मन्या समञ्जञ्छमितान देवः इन्द्रस्य हव्यजठरं प्रमाणस्वदादि यज्ञं मधुना घृतेन स्तोकानामिन्दं प्रदिशोर इन्द्रो ऋषायमानो वृषभस्तोराषाड् घृतपुषा मनसा मोदमान स्वाहा देवा अमृताः मादयन्तम् यदमगन्मदेवयजनं पृथिव्या यत्र देवास अजोषन्त विश्वे रक्षामाभ्याज्ञासन्तरन्त यजोद्धे आयस्पोषेण समिषामादेमः इमा आपस्समो मे सन्तु देवे रोषदे त्रायस्वस्वधे देवैनज्ञाहिज्ञासेः आपो अस्मान् मातरश्वन्धयन्तो घृतेन न घृतः पः पुनन्तो विश्वज्ञहिरिप्रं प्रवहन्ति देवे सुदिदाभ्यस्वचिरापूतये मे दीक्षातपसो स्तनोरासितां त्वा शिवाज्ञ शक्मां परे दधे भद्रं वर्णं पुष्यन् महेनां पयोऽसि वर्चोदासि वर्चो मे देहे वृत्रस्य कनेन कासि चक्षुर्दासि चक्षुर्मे देहे चित्पथः मा पुनातु वाक्पथः मा पुनातु देवो मा सविता पुनः त्वच्छद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपदे पवित्रभूतस्य यत्कामः पुनस्तच्छकेयम् आवो देवास एमहे वामं प्रायध्यध्वरे आवो देवास आशिषो यज्ञिया स्वाहवामहे स्वाहा यज्ञं मनस स्वाहोरन्तरिक्षात् स्वाहा द्यावा पृथिवेभ्यः स्वाहा माताधारभ्ये ओघोद्ये प्रयुजग्नये स्वाहा मेधाये मनसेग्नये स्वाहा दीक्षायै तपसेग्नये स्वाहा सरस्वत्यै ओष्णेग्नये स्वाहा आभोः देवैर्बृहदैर्विश्वशम्भव द्यावाः पृथिवे उर्वन्तरिक्षा बृहस्पतये हविषाः विधेम स्वाहा विश्वो देवस्य नेतुर्मर्भो वरेदसख्यम् विश्वो राययेषु ध्यदित्यं नम्रनेत
पुष्यसे स्वाहा रोमस उपनयः स्तुतः स धमादस्तु शूरः पावृधनस्तवेशैर्यस्य पूर्वेर्द्यमभिभूति पुष्यात् आन इन्द्रो दुरादभिष्टिकृतवसे यासदुग्रह ओ ज्येष्ठभर्नृपतिर्वज्रबाहुः सङ्गे समत्सोतुर्मणिः प्रतन्योन् न इन्द्रो हरिभिर्यात्वच्छार्वाचेनो वसे राधसे च तिष्ठादिवज्रे मघवाविरक्षेमं यज्ञमनो नो वाजसातो प्रादारमिन्द्रामविदारमिन्द्रज्ञ हवे हवे सुहमज्ञ सोममिन्द्रम् प्रादारमिन्द्रामविदारमिन्द्रज्ञ हवे हवे सुहमज्ञ शोरमिन्द्रम् त्वयामि शक्रं पुरोहतमिन्द्रज्ञ स्वस्ति नो मघवाधात्मिन्द्रः इन्द्रसूत्रामा स्वमा अवोभिस्वमृलेखो भवतु विश्ववेदः बोधतं वेग अभयं गृणातु सुवेद्यस्य पदयस्य माम् तस्य वयज्ञसोमतो यज्ञयस्यापि भद्र सौमनसस्य माम् ससूत्रामा स्वमा इन्द्रो अस्मे आराच्यद्वेषस्य नोदर्यो योतो आमन्द्रैरिन्द्रहरेभिर्याहि मयूररोमभिः पात्वागचिन्नियमं भिन्नपाशिनोति धन्वे पदां एहे वेदिन्द्रं मृगाणं वज्रबाहुं वसिष्ठासो अभ्याच्यन्यर्कैः सनस्तुतो वीरमद्धतु गोमद्योऽयं पात् स्वस्ति स्वधामः समिद्धो अग्निरश्विना तप्तो घर्मो विराट् सुतः दुहेधेन सरस्वते सोमज्ञ शुक्रमिहेन्द्रियम् अनोपाभृषजा सुतेष्विनो भा सरस्वते पद्वारजाग्यसेन्द्रियमिन्द्राय पथधर्महोण इन्द्रायेन्दुग्य सरस्वते नराशज्ञसेन नग्नहम् अधातामश्विनामधो भेषजं बिगजासुते आजुह्वाना सरस्वतेन्द्रायेन्द्रियाणि वीर्यम् इलोभिरश्विनागिषज्ञ समोर्जज्ञ सज्ञ सयन्दधुः अश्विना नमोज सुतज्ञ सोमज्ञ शुक्रं परिश्रुता सरस्वती तमा भारद्बर्हिगेन्द्राय पादवे
आजुह्वाना सरस्वतीन्द्रियाणि वीर्यम् इलाभिरश्विना इषग् समोर्जग् सग् तयिन्दधुः अश्विना नमोज सुतग् सोमग् शुक्रं परिस्वता सरस्वती तमा भारत्बर्हिषेन्द्राय पातवे कवश्यो न व्यजस्वते रश्म्यभ्यां मधुरो दिशाः इन्द्रो न रोदसे उभे दुहे कामान् सरस्वते उषासा नक्तमश्विना दिवेन्द्रज्ञ सायमिन्द्रियैः सञ्जानाने स्वपेशसा समञ्जाते सरस्वत्या पातन्नो अश्विना दिवा पाहि नक्तज्ञ सरस्वते देव्या होताराभिषजा पातमिन्द्रज्ञ सजासुते तिस्रस्त्रेधा सरस्वत्यश्विना भारतीला तीव्रं पारिश्रुता सोममिन्द्राय सुषकुर्मदम् अश्विना भेषजं मधु भेषजन्नः सरस्वते इन्द्रे त्वष्टा यशश्रियज्ञ रूपज्ञ रूपमधुस्वते ऋतथेन्द्रो वनस्पतिः समानः पारिश्रुता केलालमश्वेभ्यां मधु दुहे धेनुः सरस्वते गोभिर्न सोममश्विनामासरेण परिश्रुता समाधातज्ञ सरस्वत्या स्वाहेन्द्र सुतं मधु अश्विना वीरेन्द्रियन्नमोजर्धिया सरस्वती शुक्रमासुरात्वसो मघमिन्द्राय जभृरे यमश्विना सरस्वती हविषेन्द्रमवर्धयन् सबिभेदबलं मघन्मद् नमोजा आसुरे सजा तमिन्द्रं पशवः स च अश्विनो भा सरस्वती दधाना अभ्यानोषध हविषा यज्ञ इन्द्रियैः य इन्द्र इन्द्रियं दधुः स विदावरुणो भगाः ससूत्रामाः हविष्पादर्यजमानाय सश्चतः सविदावरुणो ददत्यजमानाय दासुषे दत्त नमो जयर्वसूत्रामाबलमिन्द्रियम् वरुणस्तत्रमिन्द्रियं भगेन सविदाश्रियम् सूत्रामायशसा बलं दधाना यज्ञमाशता अश्विना गोरेन्द्रियमश्वेभ्यर्वीर्यं बलम् हविषेन्द्रज्ञ सरस्वती यजमानमवर्धयन् ताना सत्या सुपेशसा हिरण्यवर्तने नरा सरस्वती हविष्मदेन्द्रकर्मसु नोवता ताभिषजा सुकर्णा सुदुघा सरस्वती व्रत्रः शतक्रतुरिन्द्राय दधुरिन्द्रियम् युवज्ञासुरामामश्विना नमो जा आसुरे सचा विपिपाना सारस्वतेन्द्रं कर्म स्वावता पुत्रमेव पितरा अश्विनोभ्येन्द्रावधुः काव्यैर्
दौगशनाभिः यत्स्वरामं व्यपेबश्चजेभिः सरस्वते त्वा मघवन्नभिष्णग यस्मिन्नश्वासर्षभास उक्षणो वशा सृष्टा स आहोताः केलालपे सोमा पृष्ठाय धसे रुदामदिन्द्यन्नयचारो मग्नये अहो यज्ञ हविरास्येते सृजे मघृतं चम्बे वसोमाः वाजसनिग्रयमस्मे सुवीरं प्रशस्तं धेहि यशसं बृहन्तम् अश्विना तेजसा चक्षुः प्राणेन सरस्वते वीर्यम् वाचेन्द्राय दधुरिन्द्रियम् ओषुणा सत्याश्वापद्यातमश्विना वर्ते रुद्रा नृपायम् न यत्परो नारधर्षद्वृषन्वसो दुःशग्रपर्त्यो रिपोः तान आवोह्लमश्विना रयं पिशङ्गसन्दृशम् धिष्ण्यावरिभोविदम् पावकानः सरस्वते वाजिनेवते यज्ञं वष्टधियावासः चोदयित्री सुमृतानां चेदं ते स्वमतीनां यज्ञं दधे सरस्वती सरस्वते प्रचेदयति केतुना धियो विश्वा विराजते इन्द्रायाहि चित्रभाणो सुताय मे त्वायवाः अन्वेभ्यस्तना पूतासाः इन्द्रायाहि धियेषितो विप्रजोतः सुतावतः उपब्रह्माणि वाघताः इन्द्रायाहि तोतो जन उपब्रह्माणि हरिवः सुते दधिष्वनश्चनाः अश्विना पिबतां मधु सरस्वत्या सजोषसा इन्द्रसूत्रमावृत्रः युषन्ताग्र सौम्यं मधु पृथिव्यै त्वा अन्तरिक्षाय त्वा दिवे त्वा शुन्धतां लोकः पितृषदन इति पितृसदनः यवः असि यवया अस्मत् द्वेषः यवया अरातीः पितॄणां सदनम् असि स्वावेश इति सु आवेशः असि अग्रे गा इत्यग्रे गाः नेतॄणां वनस्पतिः अधीति त्वा स्थास्यति तस्या वित्तात् देवः त्वा सविता मध्वा अनक्तु सुपिप्पलाभ्य इति सुपिप्पलाभ्यः त्वा ओषधीभ्य इत्योषधीभ्यः उदिति दिवं स्तभाना एति अन्तरिक्षं प्रण पृथिवीम् उपरेण दृगम्भाते ते धामानि उष्मसि गमध्ये गावः यत्र भूरिशृङ्गा इति भूरिशृङ्गाः अयासः अत्र तत् उरुगायस्येत्युरुगायस्य विष्णोः परमं पदम् अवेति भाति भूरेः विष्णोः कर्माणि पश्यत यतः व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तत् विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि इव चक्षुः आततमित्याततम् ब्रह्मवनिमिति ब्रह्मवनिं त्वा क्षत्रवनिमिति क्षत्रवनिं सुप्रजावनिमिति सुप्रजावनिं राजस्पोषवनिमिति राजस्पोषवनिं परीति ऊहामि ब्रह्मा दृगम्हा क्षत्रं दृगम्हा प्रजामिति प्राजां दृगम्हा राजः पोषं दृगम्हा
परिवीरिति परिवीः असि परीति त्वा दैवीः विषः व्ययन्ताम् परीति इमं राजः पोषः यजमानं मनुष्याः अंतरिक्षस्य त्वा आसानौ अवेति गुहामि इषे त्वा उपवीरित्युपावीः असि उपो इति देवान् दैवीः विषः प्रेति अगुः वह्निः उषिजः बृहस्पते धारया वसूनि हव्या ते स्वदन्तां देवा त्वष्टः वसूरन्वा रेवतीः रमध्वम् अग्नेः जनित्रम् असि वृषणौ स्थः उर्वशी असि आयुः असि पुरूरवाः घृतेन अक्ते इति वृषणम् दधाथ गायत्रम् छन्दः अनुप्रेति जायस्व त्रैष्टुभम् जागतम् छन्दः अनुप्रेति जायस्व भवतम् नः समनसा वितिसा मनसौ समोकसा वितिसम् ओकसौ अरेपसौ मा यज्ञम् हिगंसिष्टम् मा यज्ञपतिमिति यज्ञापतिम् जातवेदसा विति जातवेदसौ शिवौ भवतम् अद्य नः अग्नौ अग्निः चरति प्रविष्ट इति प्रविष्टः ऋषीणाम् पुत्रः अधिराज इत्यधिराजः एषः स्वाहा कृत्येति स्वाहा कृत्य ब्रह्मणा ते जुहोमि मा देवानाम् मिथुया कः भागधेयमिति भागधेयम् एति ददे ऋतस्य त्वा देव हविरिति देव हविः पाशेन एति रभे धर्षा मानुषान् अभ्य इत्यतभ्यः त्वा ओषधीभ्य इत्योषधीभ्यः प्रेति उक्षामि अपाम् पेरुः असि स्वात्तम् चित् सदेवमिति स देवम् हव्यम् आपः देवीः स्वदता एनम् समिति ते प्राण इति प्राणः वायुना आगच्छताम् समिति यजत्रैः अङ्गानि समिति यज्ञपतिरिति यज्ञापतिः आशिषेत्य आशिषा घृतेन अक्तौ पशुम् त्रायेथाम् रेवतीः यज्ञपतिमिति यज्ञापतिम् प्रियधेति प्रियाधा एति विशता उरो इति अंतरिक्षा सजोरिति सजूः देवेन वातेन अस्य हविषहात्मना यजासमिति अस्य तनुवा भव वर्षीयः वर्षीयसि यज्ञे यज्ञपतिमिति यज्ञापतिम् धाः पृथिव्याः सम्पृच इति सम्पृचः पाहि नमः ते आतानेत्या आताना अनर्वा प्रेति इहि घृतस्य कुल्याम् अन्विति सः प्रजयेति प्राजया सह राजः पोषेण आपः देवीः शुद्धायुव इति शुद्धायुवः शुद्धाः यूयम् देवा ऊर्ध्वम् शुद्धाः वयम् परिविष्टा इति परिविष्टाः परिवेष्टार इति परिवेष्टारः वः भूयास्मा वाक् ते एति प्यायता प्राण इति प्राणः ते एति प्यायता चक्षुः ते एति प्यायता श्रोत्रम् ते एति प्यायता या ते प्राणानिति प्राणान् शुकु जगामा या चक्षुः या श्रोत्रम् यत् ते क्रूरम् यत् आस्थितमित्यास्थितम् तत् ते एति प्यायता तत् ते एतेन शुन्धताम् नाभिः ते एति प्यायताम् वायुः ते एति प्यायताम् शुद्धाः चरित्राः शम् अद्भ्य इत्यतभ्यः शम् ओषधीभ्य इत्योषधीभ्यः शम् पृथिव्यै शम् अहो अभ्यामित्यहभ्याम् ओषधे त्रायस्व एनम् स्वधित इति स्वाधिते एमा एनम् हिगंसिः रक्षसा भागः असि इदम् अहम् रक्षः अधमम् तमः नयामि यः अस्मान् द्वेष्टि यम् च वयम् विष्मः इदम् एनम् अधमम् तमः नयामि इषे त्वा घृतेन द्यावा पृथिवी इति द्यावा पृथिवी प्रेति ऊर्न्वाथ अच्छिन्नः रायः सुवीर इति सुवीरः उरु अंतरिक्षम् अन्विति इहि स्वाहा ऊर्ध्वनभसमित्योर्ध्वा नभसम् मारुतम् गच्छतम् समिति ते मनसा मनः प्राण इति प्राणः
समिति ते मनसा मनः समिति प्राणेनेति प्राणेन प्राणमिति प्राणं जुष्टं देवेभ्यः हव्यं घृतवदिति घृतावत् स्वाहा ऐन्द्रः प्राण इति प्राणः अंगे अंग इत्यंगे अंगे नीति देध्यत ऐन्द्रः अपान इत्यपानः अंगे अंग इत्यंगे अंगे वीति बोभुवत् देवतष्टः भूरि ते सगं समिति सम एतु विशुरूपा इति विशुरूपाः यत् स लक्ष्मण इति स लक्ष्मणः भवथ देवत्रेति देवात्रायन्तम् अवसे सखायः अन्विति त्वा माता पितरः पदन्तु श्रीः असि अग्निः त्वा श्रीणातु आपः समिति अरिनन् वातस्य त्वा आध्रज्यै समिति ते मनसा मनः समिति प्राणेनेति प्राणेन प्राण इति प्राणः जुष्टं देवेभ्यः हव्यं घृतवदिति घृतावत् स्वाहा ऐन्द्रः अपान इत्यपानः अंगे अंग इत्यंगे अंगे नीति देध्यत ऐन्द्रः अपान इत्यपानः अंगे अंग इत्यंगे अंगे वीति बोभुवत् देवतष्टः भूरि ते सगं समिति सम एतु विशुरूपा इति विशुरूपाः यत् स लक्ष्मण इति स लक्ष्मणः भवथ देवत्रेति देवात्रा यन्तम् अवसे सखायः अन्विति त्वा माता पितरः पदन्तु श्रीः असि अग्निः त्वा श्रीणातु आपः समिति अरिनन् वातस्य त्वा धृज्यै पूष्णः रग्गिह्यै अपाम् ओषधीनां रोहिष्यै घृतं घृतपावान इति घृतपावानः पिबता वसां वसापावान इति वसापावानः पिबता अन्तरिक्षस्य हविः असि स्वाहा त्वा अन्तरिक्षाय दिशः प्रदिश इति प्रादिशः विदिश इति विदिशः उद्दिश इत्युत दिशः श्रेयो वसीय आयत् सम्भूतं भूतं चित्रकेतुः प्रभानाभान् सम्भान् योतिस्तपन्नभितपन्न रोचनो रोचमानः शोभायानः
ओषधीभ्य इत्योषधीभ्यः शं पृथिव्यै शं अहो अभ्यामित्यहभ्याम् ओषधे त्रायस्व एनं स्वधित इति स्वाधिते एमा एनं हिगुंसीः रक्षसां भागः असि इदम् अहं रक्षः अधमं तमः नयामि यः अस्मान् द्वेष्टियं च वयं द्विष्मः इदम् एनम् अधमं तमः नयामि इषे त्वा घृतेन द्यावा पृथिवी इति द्यावा पृथिवी प्रेति ऊर्न्वाथा अच्छारायः इति सुवीरः उरु अन्तरिक्षम् अन्विति इहि वायो इति वीति इहि स्तोकानां स्वाहा ऊर्ध्वनभसमित्योर्ध्वनभसम् मारुतं गच्छतम् समिति ते एपनसा मनः समिति प्राणेनेति प्राणेन प्राण इति प्राणः जुष्टं देवेभ्यः हव्यं घृतवदिति घृतवत् स्वाहा ऐन्द्रः प्राण इति प्राणः अंगे अंग इत्यंगे अंगे नीति देध्यत् ऐन्द्रः अपान इत्यपानः अंगे अंग इत्यंगे अंगे वीति बोभुवत् देवा त्वष्टः भूरिते सगं समिति सं एतो विशुरूपा इति विशुरूपाः यत् सलक्ष्माण इति स लक्ष्माणः भवथ देवत्रेति देवात्रा यन्तम् अवसे सखायः अन्विति त्वा माता पितरः मदन्तु श्रीः असि अग्निः त्वा श्रीणातु आपः समिति अरिणन् पातस्य त्वा धृज्यै पूष्णः रग्गह्यै अपाम् ओषधीनां रोहिष्यै घृतं घृतपावान इति घृतपावानः पिबत वसां वसापावान इति वसापावानः पिबत अन्तरिक्षस्य हविः असि त्वा अन्तरिक्षाय दिशः प्रदिश इति प्रदिशः आदिश इत्यादिशः विदिश इति विदिशः उद्दिश इत्युत दिशः स्वाहा दिग्भ्य इति दिग्भ्यः नमः दिग्भ्य इति दिग्भ्यः समुद्रं गच्छ स्वाहा अन्तरिक्षं गच्छ स्वाहा देवं सवितारं गच्छ स्वाहा अहोरात्रे इत्यहः रात्रे गच्छ स्वाहा मित्रावरुणाविति मित्रावरुणौ गच्छ स्वाहा सोमं गच्छ स्वाहा यज्ञं गच्छ स्वाहा छन्दागंसि गच्छ स्वाहा द्यावा पृथिवी इति द्यावा पृथिवी गच्छ स्वाहा नभः दिव्यं गच्छ स्वाहा अग्निं वैश्वानरं गच्छ स्वाहा अद्भ्य इत्यतभ्यः त्वा ओषधीभ्य इत्योषधीभ्यः मनः मे एहार्दि यच्छा तनुं त्वचं पुत्रं नप्तारम् अशीयाशुक असि तम् अभीति शोचा इदं विष्णुर्विचक्रमेत् एदापदं स्वाघृतेन त्रेधा निदधे पदं समोढमस्य पादं सुरे पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा विनाव्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ